Miss Pooja Lupne is one of the most important team members of mine, and this dates back to a couple of years, an incident which I'm going to narrate you. Pooja's increment was due. I was told by my business partner, Mr. Kaushal, to look into the matter because mostly for this company, I look into the financial matters, whether it's salary increment, incentives, investments, big purchases. All the decisions are done on my behest, and it's done on me. It's my accountability. So Kaushal had let me know in a meeting that it is due and it needs to be done quickly. 6 months down the line, I again got a reminder from him and asking me to review the salary of Miss Pooja. Another 6 months went back. This was 1 year from the date of increment that should have actually happened, and things started becoming little cranky. There were arguments. There was some negative, frustrating emotions. कि एक इंक्रीमेंट जो 1 साल से रुका हुआ था and the director of the company was absolutely casual about such a big incident. One day, and this is after the 15th month, that I finally found time to get to her place, discuss the increment, and the matter was solved in half an hour. Friends, the lessons from this incidents that I got is the topic of this presentation, that is stress free productivity. जो काम दोस्तों एक इतना महत्वपूर्ण काम था मेरे टीम मेंबर के लिए, जिसे उसे सेंस ऑफ प्रोग्रेस आता, जिसे उसे ग्रोथ का फीलिंग आता, वो उस कंपनी के लीडर ने 15 महीने पेंडिंग रखा. Why? Don't know. I'm a busy executive, I'm a multitasker, I look after several businesses, but I could not find time for the big priorities of my life. And this created stress in me. This created a sense of low self esteem in me, and it also damaged my relationship with my business partner and my another very important team member. तो क्यों हुआ ये, इसके ऊपर मैं जब मंथन कर रहा था तो उसी वक्त मुझे समझ में आया कि दिस हैज बिकम माय वर्क पैटर्न वेयर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट important things on time, and this is where it caused all lot of stress. And because there was stress of so many pending tasks which were important, which were due, which were uh, at my disposal, I was not doing, and that created stress, and that absolutely downed and killed my productivity. Friends, this is Kaustubh Panse, corporate trainer and business coach. I welcome you all to today's topic, the stress free productivity. The method is GTD, that is getting things done. So this is just prior to lockdown, couple of months before the lockdown, I got hold of this book from a very cute vendor of mine, a library wala called as Mr. Anand. Anand gave me this book of David Allen, that is getting things done. This video presentation today is looking into how I implemented the system that was given by Mr. David Allen और उससे कैसे मेरा प्रोडक्टिविटी बिल्ड हुआ. दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक ही चीज़ आपको अश्योर करता हूँ, एक एक चीज़ जो मैं इसमें बताने वाला हूँ ये खुद मैंने एक्सपीरियंस की है. सो फॉर अ बिजी एग्जीक्यूटिव, फॉर अ पीपल मैनेजर, फॉर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू रियली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज take out stress out of the work. And how do you take out stress out of the work? This is what I am going to tell you in this presentation. देखिए, सबसे पहले जो मेरे बारे में 6 महीने से पहले जो कंप्लेंट्स थी कि सर थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो जो बड़े मुद्दे होते हैं वो सर उस पर प्रायोरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं. उन्हें बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है. उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे कभी ध्यान नहीं होता है. ही इज़ बिजी ऑल द टाइम बट ही नेवर पेज अटेंशन टू पीपल. यही दिक्कतें घर पे भी थी. छोटे छोटे टास्क जैसे बच्चों के रिलेटेड या वाइफ के रिलेटेड या मॉम का मेडिसिन हो, हर चीज़ में लेट लतीफ़ी हो रही थी. हर चीज़ में मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता. देयर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स दैट आई वाज नॉट ऑन ट्रैक, आई वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, I was not taking care of my people. And now, let me introduce you to what is GTD and how I got rid of all the complaints which my nears and dear ones, my team members, my business partners experienced with me. देखिए, getting things done, that is GTD,
is not any other to do list, it is a work management system. जैसे हम लोग स्टिकी नोट्स बनाते हैं, व्हाट आर स्टिकी नोट्स? स्टिकी नोट्स आर जस्ट जेंटल रिमाइंडर्स कि हमें टास्क करना है। लेकिन जीटीडी जो है, गेटिंग थिंग्स डन, ये जो डेविड एलन का सिस्टम है, इट इज अ वर्क मैनेजमेंट सिस्टम विच कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेस एवरी काइंड ऑफ वर्क। कोई भी टास्क जो आपकी जिम्मेवारी है, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स है, प्रायोरिटीज है, फाइनेंशियल डिसीजन है, टीम डिसीजन है, हायरिंग है, कोई बड़ा मुद्दा है जैसे ऑफिस रेंटल या बिजनेस एक्सपांशन, everything can be can be sorted out by using this work management system. So I'm going to explore how I did it for myself, and one thing I'm assuring, 100% आपको इससे रिजल्ट आएगा. Your life will become happy, your job will become very exciting, बहुत मजा भी आएगा, and people will have a very positive image of you. So if you want to learn all these things and enjoy these benefits, just look into this video. See friends, सबसे पहला जो बेनिफिट मुझे 6 महीने में दिखा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम इज कंप्लीट प्रोडक्टिविटी. एवरी डे, एवरी आवर नाउ हैज अ मीनिंग. सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग माई टाइम बेटर. आई एम फिनिशिंग मोर ऑफ द टास्क दैट आई एम अलोकेटेड. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गेटिंग मोर ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर डिजायर्ड फ्रॉम यू. So I can happily say that after implementing getting things done from David Allen, I have become more productive. The most I was discussing it with my friend Kaushal, and I told him very proudly, the one thing that I absolutely love about this system is it is absolutely stress free. Why it is stress free, I will cover in the coming slides. I am having great fun, and being a speaker, being a YouTuber and a business coach and corporate, I require a lot of reference material. So I have generated lot of reference material from my experiences, from my reading, and I have cataloged it in a manner कि अभी मैं उस मटेरियल का कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बड़े डिसीजंस लेना हो, चाहे ऐसा यूट्यूब का वीडियो हो, या फिर मेरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या कोचिंग के सेशंस हो. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी फील स्ट्रेस. द नंबर वन रीजन व्हाई वी ऑल फील स्ट्रेस्ड एट वर्क प्लेस, बैलेंसिंग अवर वर्क लाइफ प्रायोरिटीज, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमें स्ट्रेस इसलिए फील होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे इनकम्प्लीट टास्क सस्पेंडेड रहते हैं. एक मेव रीजन जो है कि हमें जो टास्क करना होता है उस समय अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग उसके ऊपर सवाल पूछते रहता है. इट इज आस्किंग अस व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस टास्क, व्हेन आर वी गोइंग टू डू दिस. तो वो टास्क बड़ी प्रायोरिटी का हो या छोटी प्रायोरिटी का हो, घर पे सब्जी लाने का या ग्रोसरी ऑर्डर करने का हो, या फिर बिजनेस एक्सपांशन करने का हो, या कोई बड़े आइडिया या कोर्स को डेवलप करने का हो, कोई भी ऐसा टास्क छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो सस्पेंडेड है और अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर पता नहीं है कि हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल टास्क, व्हेन आर वी गोइंग टू डू इट, व्हाई वी आर डूइंग द टास्क, it will create stress, and that means that there are a lot of tasks which are pending in your mind. तो अगर आपको frustration feel हो रहा है, आपको overload feel हो रहा है, overwhelm feel हो रहा है, आपको stress feel हो रहा है, I can guarantee you, you have lot of tasks which are pending, which are suspended in your mind. They have not been captured, and you have not told your mind what to do about it. So how does GTD works? See, GTD is a 5 step process. आपको पूरा समझने के लिए किताब को पढ़ना पड़ेगा. This is, you can just take a basic course in GTD and how I understood and implemented it. See, GTD में 5 processes हैं, 5 steps हैं जिससे ये पूरा work management system बनता है. See, lot of people use to-do list, lot of people use sticky notes, but those are just reminders of isolated tasks. GTD इज अ कंप्लीट वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो टास्क को स्टार्ट होने से एंड तक, छोटा बड़ा, बिग प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, सारे टास्क के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है विच गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंड एब्सोल्युटली इंप्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी, दैट इज गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट्स व्हाट यू आर पेड फॉर. सो द फर्स्ट स्टेप इन जीटीडी इज क्लैरिफाइंग. क्लैरिफाइंग का मतलब क्या है? देखिए, जो भी टास्क हमें आते हैं उसको एक क्लैरिटी चाहिए कि वो टास्क हम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं. सेकेंड स्टेप है उसमें कैप्चर. कैप्चर का मतलब होता है कि आपके मन में जो भी सारे टास्क घूम रहे हैं उसको आप पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए. चाहे वो फिनेंशियल डिसीजन हो, किसी का हायरिंग हो, किसी का इंक्रीमेंट हो, आप जो भी सारी चीजें हैं उसको आप कैप्चर कीजिए. चाहे वीडियोस बनाने हो, वॉट एवर टास्क दैट कम्स टू योर माइंड, लेट्स से आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट टूटा हुआ है, उसको भी आप कैप्चर करके रखिए.
Third is you need a system in GTD that organizes your task. Means what it does is what is the next action that you are going to take on the task. आपका दिमाग रेस्टलेस इसलिए होता है और वो पीस में तभी आएगा जब आप क्लैरिफाई कर लोगे और उस टास्क को ऑर्गेनाइज कर लोगे कि मैंने ये टास्क का करना क्या है. द माइंड इज ओनली आस्किंग व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू परचेज अ हाउस and this decision is going to be taken in the next year because of maybe covid, you don't have the cash flow now, you're going to decide. लेकिन जब आप ये लिख देते हो ना दोस्तों कि ये टास्क को मैंने होल्ड पे डाल दिया है 1 साल के लिए क्योंकि अभी मेरे पास कैश फ्लो नहीं है, यू विल फील रिलीव्ड, यू विल फील स्ट्रेस फ्री. फोर्थ इज अ स्टेप कॉल्ड एज रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आपने पूरे वीक में जो भी काम किए या जो भी पेंडिंग है उसका जायजा लेना, उसको रिव्यू करना. पांचवा जो स्टेप होता है एंगेज, कि जिसमें आप मीनिंगफुली आपके जो बड़े हॉराइजन के जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी आप समय निकालें. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना बिजी शेड्यूल में काम तो बहुत सारे निपटाते हैं लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ा इंपैक्ट दे सकता है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़े लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े रिलेशनशिप के प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहीं पे छूट जाते हैं. तो दोस्तों ये जो 5 स्टेप्स हैं ये कैसे इंप्लीमेंट होती है एक एक करके देखते हैं. See, the first thing before we begin, what you will require is you will require little bit of office stationery at your workplace and maybe at your home as well. You will require sketch pens. You will require lot of A4 sheets, art paper sheets. Require a stapler, paper trays, file folders, punch machines. You will require a lot of paper clips because lot of documents are going to be created. And I prefer it. You will require a lot of writing pens as well, multicolor pens, sketch pens, or other. Other gel pens or something, because we want to make a system which is fun, which is exciting, which is colorful. So moving on, सबसे पहले शुरुआत होती है कैप्चर से और क्लैरिफाई से. तो आपको बहुत सारे लूज ब्लैंक पेपर्स एक अलग अलग साइजेस के आपके टेबल पे रखने होते हैं. ये कंप्लीट सिस्टम है. इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत होता है कैप्चर और क्लैरिफाई पे. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल this is a loose blank paper and there are scores of sheets which I always keep it at my work table. तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बहुत सारे लूज ब्लैंक पेपर्स हमेशा रेडी रखने हैं. सेकेंड, यू हैव टू कैप्चर एंड क्लैरिफाई. जो भी टास्क आपके मन में आए, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैप्चर इट. लेट्स से फॉर एग्जांपल if you have to renew the car insurance of you renew your car insurance, you have to pay your LIC, you have to get the school notebooks for your kids, you have to transfer money to somebody, you have to transfer your rent, whatever the task, you have to capture it on a piece of paper. You can see it here. I'll just use a marker. See here what I have done is I have दिस इज द टास्क दैट केम इन माई माइंड. जो भी काम आपके मन में आए ना, आपको उसको कैप्चर करना है, आपको उसको मन में रखना ही नहीं. यू जस्ट से माई टास्क ऑर्गेनाइज यू वीक. व्हाट इज क्लैरिफाई? क्लैरिफाई इज यू हैव टू क्लैरिफाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दिस टास्क. आई विल कम टू दिस. तो एक बार आपने ये कर लिया, देन आपको हर चीज जैसे मैंने कहा उसको पेपर पे नोट करना है. सेकेंड, लेट्स इन ब्रीफ अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो प्रोसेस. देखिए जो भी टास्क आपको मिला है उसको आपको 5-6 एरियाज में बांट देना है. क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करना है कि अभी मान लीजिए आपको 6 प्रकार के टास्क आते हैं. पहला टास्क है कि आपको आपके मॉम को कॉल करना है. एक 2 मिनट का काम है, उसे कहीं पे नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है. आप सीधा आपका मोबाइल उठाइए, बात कर लीजिए आपके मॉम से, काम खत्म. इट डोंट कीप इट पेंडिंग फॉर एनी अदर टाइम. सेकेंड, वो काम होते हैं जो आप इमीडिएटली नहीं करने वाले होते हैं, उसे कहा जाता है डेफरमेंट. यू हैव टू डेफर इट. सो एनीथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 2 minutes हैज टू बी डेफर्ड. लेकिन वहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि आई एम डेफरिंग दिस टास्क टू दिस डेट. थर्ड is something called as project work. See, there are tasks which cannot be done in a single go. एक single task नहीं होता है. So let's say for example my team members पूजा सैलरी. तो पूजा सैलरी ऑन द सर्फेस अपीयर्स कि बस उसका सैलरी इंक्रीमेंट करना है, लेकिन उसके लिए मुझे एचआर से पहले डॉक्यूमेंट मंगाने पड़ेंगे. लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था, कितने का हुआ था. वी नीड टू स्टडी हर अप्रेजल शीट, वी नीड टू डू ऑल कोर्स ऑफ थिंग्स, then we need to discuss internally, then we need to refer it to the HR, we need to have a discussion with Pooja, then we need to agree, then there has to be a small celebration for that. तो ये सारा बन के हो जाता है प्रोजेक्ट. लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट आई एम
इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मी। जिसके लिए मुझे एक्सेल शीट्स चाहिए, मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, मुझे एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड चाहिए, मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मुझे और कई सारे कैटलॉग्स चाहिए। तो ये सारे हो गए प्रोजेक्ट वर्क। Then there are tasks in your mind, let's say for example purchasing a new home or working on a new course for let's say sales coaching. These are tasks which you have not yet decided to be done now, which you need to be put in the category of incubate. तो ये वर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, सिंपल एक फ्लो चार्ट है। हर टास्क को आपको इन करना है, उस टास्क में क्या है ये बताना है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन ऑन दैट has to be decided. Whether you are trashing that task, whether you are incubating it for the some other time, or whether it is a reference material, आपको सारा इसमें clarify करना होता है. So moving on, what are the task types? 2 मिनट टास्क मैंने बता दिया। ऐसा कोई भी टास्क जो आप अगले 2 मिनट में कर सकते हो, कॉल से लेके कोई रेफरेंस मटेरियल नोट डाउन करना, कहीं पे रिमाइंडर लगाना, किसी का पेमेंट करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू पे टू योर laundry guy and this is $500 and you have to just make a phone pay transfer or a paytm transfer, आप इमीडिएटली अगले 2 मिनट में उसको करके उस टास्क को खत्म कर देना होता है। सेकंड डेफर का हमने बात किया। थर्ड ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज कॉल्ड द बेस्ट पर्सन टास्क। बेस्ट पर्सन टास्क में क्या करते हैं, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप हु इज द बेस्ट पर्सन हु कैन डू दिस टास्क ऑन योर बिहाफ। आपको करने का जरूरत नहीं है बट दिस पर्सन कैन डू इट। देयर आर लॉट ऑफ टास्क विच माय फ्रेंड कौशल डज इट फॉर मी। लेट्स से मनी ट्रांसफर्स, let's say finding out the best insurance for me, finding out whether the covid policy I am buying is correct or not. So he has got that financial management experience. So what I will do is I will identify him as the best person to get the job done, and I will write on my task that best person Kaushal to do this task on this date, and that is the next action. There are a lot of, you have to run a lot of errands, getting the grocery, getting all the stuff. So we have got our office guy Mr. Shambhu who does it for me. But it is very important for me to understand that what is the task type. Then there is incubate. You incubate a lot of ideas. Project work, I've already told you. See, and for us, reflecting on daily experiences, financial statements, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आगे जाके रेफरेंस मटेरियल में काम आती है। I'll give you an example. See, for last 10 years, I must have wrote at least 50 registers where I have kept notes of the great books that I have read. I have documented and reflected on my own experiences, good decisions, bad decisions, सारों का कच्चा चिट्ठा है. But for the past 10 years, I didn't have a system to record and store this data in a form which is accessible when I want it. Let's say for example, I am now making a video on self-confidence. मैंने 1 साल पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ा था और कुछ एक्सपीरियंसेस अपने डॉक्यूमेंट किए थे वर्क प्लेस पे। किसी क्लाइंट डिस्कशन से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ पता चला था। बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर स्टोरिंग सिस्टम, now all this is kept in some rough notebooks and which is not accessible. Today with GTD I have created about 35-40 different files where I have categorically kept my documents in separate subject, and the best part is whenever I want it is at my disposable, it is at my disposal, and where I can access the material so I can use it meaningfully. Finally you should also know which task आपने सोचा था कि ये टास्क है पर अभी आप इसको सस्पेंड कर रहे हो, आप उसको ट्रैश कर रहे हो, आप इसको कचरे में डाल रहे हो। मूविंग ऑन, सी आई हैव this is not a part of what David Allen suggests, but it's just to make things exciting. I've created 3 kind of stamps. GTD में आपको जो भी टास्क करना होता है उसको आपको इन लिखना पड़ता है, that is in. P is for progress and tick mark is for accomplishment. So just to make things exciting, whatever task I accomplish, I will stamp it with in when it comes in. जो भी टास्क प्रोग्रेस में है उन्हें P का स्टैम्प होता है, और जब भी वो टास्क अकम्प्लिश होता है तो उसमें टिक मार्क लग जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज आर फ्यू टास्क। दिस वाज द टास्क विच वाज इन, जब ये आया था, नाउ इट इज अकम्प्लिश, तो इसमें ये हो गया। अगर वो टास्क प्रोग्रेस में है तो आप इसे प्रोग्रेस का स्टैम्प कीजिए। मूविंग ऑन, see the most important thing how stress is relieved and how you improve productivity is here. आपने सबसे पहले टास्क को कैप्चर किया कि मुझे मेरा वीक ऑर्गेनाइज करना है, आपने डिसाइड किया, आपने उसको कैप्चर कर लिया। फिर आपने कहा कि ये टास्क तो अभी मैं अगले 2 मिनट में करने वाला नहीं हूँ, सो आई हैव डेफर्ड इट। यू हैव पुट अ डेट ऑल्सो कि कब आपने ये टास्क लिखा था। नेक्स्ट, सी योर माइंड टू बी स्ट्रेस फ्री is just
नीड वन आंसर। वो आंसर क्या है कि आप इस टास्क के बारे में क्या करने वाले हो। सो व्हेन यू पुट द नेक्स्ट एक्शन, what I've answered my mind, and this is for me and this is for my subconscious, that I am going to this, I am going to do this on coming Saturday। एक बार मैंने हर टास्क पे नेक्स्ट एक्शन डाल दिया, चाहे वो टास्क में एक साल बाद करने वाला हूं या वो टास्क को मैंने होल्ड पे डाल दिया है, वॉट एवर द माइंड जस्ट रिक्वायर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन। the most beautiful part why things become productive in this GTD system is about task reminders। जो भी टास्क मैंने एक रूल बनाया है कि जो भी टास्क को मैं इन करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टास्क, this is a task I just got it done today। it was a small task of putting fuel into my car, and this was, and I put it on a Google Calendar reminder. And just when I was leaving for office today, a reminder popped up that I have to fill diesel apart from the car indicator. But the reminder pushed me to get the task done and dusted then and there itself। Otherwise, पहले 6 महीने के पहले I would have said, okay, what is the problem now? I can do it in the evening. In the evening, I would be tired. I would be rushing to have food, so I'd say I'll do it next morning। तो ऐसे करके स्ट्रेस पाइल अप हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम टास्क को अगर ग्रुप करके उसको रिमाइंड डाल दें, उसको टास्क रिमाइंडर अगर होगा और हमें अगर सही समय पे याद होगा, वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, यू विल गेट rid of stress। The another system of this is on your office table you need to have 3 kind of trays where you will put all these sheets। जब टास्क इन होता है तो it has to go in the in tray। जब टास्क प्रोग्रेस में होता है तो उसके लिए और एक पेपर ट्रे होता है, और जब टास्क अकम्प्लिश हो जाता है उसको आप टिक मार्क का स्टैम्प करके उसे आप कंप्लीटेड कर दें। तो तीनों अलग अलग टास्क ट्रेज में होते हैं। देन यू विल रिक्वायर अबाउट 30 to 50 फाइल्स फॉर कीपिंग योर मटेरियल। जहां पे आप टास्क कंप्लीटेड है उसका अलग फोल्डर होगा, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं उसका फोल्डर्स है, जो फिनेंशियल डिसीजन है उसके अलग फोल्डर्स हैं। सो वॉट एवर मटेरियल यू आर क्रिएटिंग, डोंट डिस्कार्ड इट अवे। जो डिसीजंस आपने लिए हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग, यू विल रिक्वायर अपने डिसीजंस का रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट फिनेंशियल डिसीजंस, एवरीथिंग नीड्स टू बी सॉर्टेड एंड प्लेस्ड इन फाइल। यू नो व्हाई? बिकॉज जब भी आपको जरूरत हो ना, वो डेटा, वो डॉक्यूमेंट वहां पे आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। जब आपको चाहिए तब वो वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट? देन मूविंग ऑन, what it has done, it has put me into a habit, it has put me into a top gear। It's a habit called as ASAP। So I don't linger now on important tasks। What the next best time that I am available for, I will get this task done। Moving on, see, when you complete this task, friends, why stress has been replaced by positivity? Because there has been a sense of achievement, a sense of accomplishment, that I could finish so many tasks। पूरा बंडल है, पूरा आर्काइव किया हुआ कि जहाँ पे आप यू कैन शो इट टू यू। Just this folder where I have archived complete tasks, so it makes life meaningful at work, where all the tasks that you have completed, small or big, reminds you and gives you positivity। And you have to archive complete tasks, I just showed it to you। And then finally, every this system calls for reviewing all your tasks, whether they are in the in category, they are in progress, they are completed, what is happening to the big projects, how many tasks were in, what was the productivity, everything you can review। So in GTD, right from capturing the task to clarifying what the task is, organizing it, then reflecting on it, that is the weekly review, and then you engage yourself in the big project task। Friends, a 10-20 minutes video is not enough। uh, you can go through the entire book, or you can go through my detailed video which I will be posting soon about getting things done। एक ही assurance देता हूँ, the workplace will become merrier, it will become stress free, and because it is stress free, it will become productive। So this is Kaustubh signing off। I usually make videos on corporate behavior and workplace principles। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, right from goal setting to strategy, decision making, to improving your productivity, time management, all kind of topics I've covered in a very different way। So please subscribe to my channel and share this video if you like the content।
This is Kaustubh signing off. Thank you very much.